welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with a brand new episode of bottle art. And in this video we are going to make something with total waste. For that you will need a bottle which should be transparent. Make sure that the nozzle of the bottle is removed. This is 2 liters bottle which is quite big. This is macrame thread. I'm going to cut it and make smaller pieces like this. Actually, I have a lot of them. They are not very small. I'm gonna cut it into small pieces. All these pieces are total waste. मैंने इनको फेंका नहीं था, मैंने इनको संभाल के रखा ताकि हम कुछ बना सके उसका बाद में. So I'm here with the one idea. See, these are very big, so I'm gonna cut it into small pieces. And trust me, it's a lot of work. It's not easy, but it takes a lot of efforts and time, obviously. So ये सब हम इस बॉटल के अंदर डालने वाले हैं. So this is the whole process. मैंने पूरी प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है बिकॉज इसको ऑलमोस्ट 2.5 hours लगे थे पूरा भरने के लिए. As it's actually a very big bottle. You can take small bottles also. ये वाली बॉटल मैंने इसी चीज़ के लिए रिजर्व करके रखा था because I have lot of pieces, so it will fit that. पहले मैंने एक एक कट करके डालना स्टार्ट किया था बट उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले हम पूरा कट कर लेते. फिर मैंने सबको कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में. देन अभी हम डायरेक्टली डाल सकते हैं बॉटल में. उसके बाद प्रोसेस थोड़ा फास्ट हुआ. स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर का एक पीस ऐसे रखा है. अगर आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव चाहिए तो आप और छोटा छोटा कट कर सकते हो, बट रिमेंबर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बट एट द एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सो इट्स वर्थ. तो अभी ये पूरा हो चुका है. Look at this, so much colorful. And check out its final look. And I added tissue paper flowers just to enhance the overall look, and it looks beautiful, I guess. If you want to know how I made this tissue paper flowers, then I will provide the link in the description box and in I button. Tutorial is already there. So guys, try this very easy bottle from the total waste material and share your creations with me. And if you like this video, then like, share and subscribe and press the bell icon so that you will get notifications
whenever I will upload any video. So see you in the next video. Till then, bye bye.